Mic testing 1, 2, 3. Hello, guys. आज हम लोग करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Preamble. Which part of the Constitution reflect the mind and ideals of the framer of the Constitution? It is preamble. ठीक है. Preamble of the Constitution reflect the mind and ideals of the framer of the Constitution. Preamble of Indian Constitution name our country as India. कैसे बोलते हैं? Preamble क्या है? Be the people of India. So preamble में इंडिया लिखा हुआ, लेकिन आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। पर preamble में भारत नहीं मेंशन है, केवल इंडिया मेंशन है। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. Legal sovereignty in India resides in the constitution itself and not in the We the people of India. The ideology was expressed in This ideology was expressed in Keshwananda Bharati case. Legal sovereignty in India resides in the constitution itself and not in We the people of India. This ideology was expressed in Keshwananda Bharati case. What are the four objectives mentioned in preamble of the Indian Constitution? Four objectives is justice, liberty, equality, and fraternity. Preamble of the Constitution of India secures all its citizens. क्या सिक्योर करता है? वही justice, liberty, equality and fraternity. The preamble of the Constitution of India resolved to secure to the citizen same justice, liberty, equality and fraternity. Who among the following has said that the preamble is an epitome of basic feature of the Constitution? Preamble को epitome कहा गया था of basic feature of the Constitution. ये कहा गया था जस्टिस मुधोलकर के द्वारा. ठीक है. In which case it was decided that the preamble is not a part of the Constitution. Preamble is not a part of the Constitution is said in Re Veruvadi Union case. The Constitution of India secures to all its citizens justice, liberty, equality, and fraternity. In the case of Golaknath versus State of Punjab, it was remarked that our preamble contained in a nutshell its ideals and inspiration. Who was the judge? Judge was Justice Sobha Rao. क्या बोले थे? Preamble contained in a nutshell its ideal and inspiration. Justice Sobha Rao. Which of the following statement is incorrect? Incorrect कौन है preamble के regarding इसमें से? तो preamble is a key to understanding of the mind of the founding father. ये तो सही है. Preamble embodies the ideals, hopes, faith, and aspiration of the people. ये भी सही है. The preamble embodies the intention of the founding father and objective of the constitution. ये भी सही है. The preamble of the constitution has no importance. ये गलत है.
Just wait for a second. One. Hello. Hmm. Let's start. Preamble of the Constitution declare India as preamble इंडिया को क्या डिक्लेयर करा है a sovereign socialist secular democratic republic. Preamble of the Constitution declare India a sovereign socialist secular democratic republic. At the time of enactment of the Constitution, which one of the following ideals was not included in the preamble? Initially, socialist was not included. The text of the preamble of the Constitution of India aims to secure dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Preamble of our Constitution is of extreme importance, and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and novel vision expressed in the preamble. Justice Sikri expressed the above opinion in which case? It was expressed in Kesava Nandabharati versus State of Kerala. क्या express किया गया था? Preamble of our Constitution is of extreme importance, and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. ठीक. In the case there is a conflict between preamble and other provision of the Constitution. जब conflict होगा preamble and other provision of the Constitution में, which will prevail over the other? So other provision will prevail over the preamble. Solomon resolution in the preamble of our Constitution is made in the name of Solomon resolution in the preamble of our Constitution is made in the name of we the people of India. In which case, Supreme Court declared that preamble is a part of the Constitution. केशवानंदा भारती केस में दो क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट हुआ कि preamble is not a part of the Constitution or preamble is a part of the Constitution. Preamble is not the part of the Constitution is declared in Ray Berubari Union case, and preamble is a part of the Constitution is declared in Golaknath case. Golaknath versus State of Punjab के केस में क्या करेगा? Preamble contain in a nutshell its ideals and inspiration. ठीक है. Indian Constitution has borrowed the ideals of the preamble from. Indian Constitution ने preamble का idea किस constitution से borrow किया था? तो preamble का just like be the people of India, be the people of USA. So it is borrowed from the USA Constitution. Preamble is a part of the Constitution. Yes, preamble is a part of the Constitution. Which one of the following statement is more correct? So, ठीक है. Preamble is the part of the Constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made. ठीक है. If no change in the basic structure is made.
तब आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट amendment should be in a way that it cannot change the basic structure. The main focus is on the basic structure of the constitution. You can amend everything, also the preamble, but you cannot amend the basic feature of the constitution. And it was held in the which case? The famous case is case Vanandavarti versus Union of India. The preamble to the Indian constitution is a part of the constitution and can be of use in interpreting other provision of the constitution in case of ambiguity. Consider the following objective as stated in the preamble of the constitution. What is the correct order in which these find places in the preamble? So, justice, social, economic and political, liberty of thought, expression and belief, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual. The preamble of the Constitution of India includes all the following except justice. The preamble to the Indian Constitution is part of the Constitution and can be of use in interpreting other provisions of the Constitution in case of ambiguity. Consider the following objectives. ठीक है जस्टिस सोशल इकोनॉमी जस्टिस के बाद लिबर्टी इक्वालिटी जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ठीक है ना दिस इज द क्रम जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जस्टिस क्या सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी क्या लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ एंड जस्टिस लिबर्टी उसके बाद इक्वालिटी इक्वालिटी किसके लिए स्टेटस एंड फॉर अपॉर्चुनिटी एंड फिर द फाइनल वन इज द फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individuals. The preamble of the Constitution of India includes all of the following except justice को छोड़ के बाकी equality of status, adult franchise and fraternity करता ही है justice नहीं करता है. Which of the following is correct about the preamble of the Constitution of India? Preamble of the Constitution of India, it was adopted after the adoption of operative articles of the Constitution. ठीक है. The correct combination of the concept of justice under preamble of the Indian Constitution is the correct combination of concept of justice under preamble of the Indian Constitution is तो अभी हम लोग देखें सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल ठीक है ना जस्टिस जस्टिस क्या है सोशल सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल fraternity equality justice justice liberty justice liberty equality and fraternity
Justice क्या है? Social, economic and religious. Fraternity, liberty of thought, expression and belief. Uh, Fraternity, equality of status and opportunity, and fraternity, assuring the dignity of the individual. Which of the following is correct about the preamble of the Constitution? It was adopted after the adoption of operative articles of the Constitution. The correct combination of the concept of justice under preamble of the Indian Constitution is क्या हो जाएगा? जस्टिस का जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? जस्टिस सोशल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल. In which case it was held by the Supreme Court that preamble is the basic structure of the Constitution. Preamble is the basic structure of the Constitution was held in Keshavananda Bharati versus Union of India. Which among the following appears first in the preamble to the Constitution of India? अभी हम लोग देखें जस्टिस. प्रियम्बल में क्या आता है? सबसे पहले आता है जस्टिस, फिर क्या आता है? जस्टिस के बाद क्या आता है? लिबर्टी. लिबर्टी के बाद क्या आता है? जस्टिस, जे एफ ई, जे एल ई एफ, जे एल ई एफ, justice, liberty, equality and fraternity. The preamble of the Indian Constitution has been amended so far once. preamble आज का केवल एक ही बार अमेंड हुआ है, ठीक है ना? preamble was amended by which amendment act? It was amended by 42nd amendment act. तो preamble अभी तक एक ही बार अमेंड हुआ था, और किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था 1976, ठीक है? और preamble इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे कहा गया था? केशवानंद भारती केस में कहा गया था. और preamble इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस में बोला गया था? अभी बता रहे हैं, जल्दी बताओ. रे बेरुबरी यूनियन केस में, ठीक है? preamble contain in a nutshell its ideal and inspiration किस में कहा गया था? गोलकनाथ में कहा गया था. Which among the following appears first in the preamble of the Constitution of India? पहले बार preamble में फर्स्ट क्या आता है? जस्टिस आता है. उसके बाद क्या आता है? लिबर्टी आता है. फिर क्या आता है? इक्वलिटी आता है. और फिर क्या आता है? फ्रेटर्निटी आता है. चलो. The preamble of the Indian Constitution एक बार हो चुका है 42nd amendment. Preamble of the Constitution was amended and the word sovereign, socialist, secular, democratic republic were substituted for the sovereign, democratic republic wide. किसके द्वारा? तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था. The preamble of the Constitution constituted India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Which of these words were not in the original preamble? Sovereign and sovereign था, socialist नहीं था, secular नहीं था, democratic republic था. sovereign democratic republic था, socialist, secular and 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया था? तो ऐड किया गया था सोशलिस्ट, सेकुलर और एक इंटीग्रिटी किया गया था ऐड. By which amendment the words secular and socialist, socialist and secular were included in the preamble? 42nd Amendment Act 1976. The words secular and socialist were added by the Indian Constitution in 1970 for amending the preamble. In which year the two words socialist and secular were added to the preamble of the Indian Constitution? 1976 में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट से. दो वर्ड किया गया था, दो इनफैक्ट तीन वर्ड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से द्वारा. इन preamble of the constitution word socialist was added by 42nd amendment है ना, section 2 of 42nd amendment act. In preamble of the Constitution of India, the word secular was incorporated by same question है. Which of the following were called cases upheld secularism as a basic feature of the Indian Constitution even before the word secular was inserted in the preamble? This was held in Keswananda Bharati versus Union of State of Kerala. The preamble to the Constitution of India contain
क्या करता है? The word socialist was incorporated in the preamble by 42nd Amendment with the effect from 3rd January 1977. By 42nd Amendment in 1976, the following words have been added to the preamble to the Constitution of India. कौन कौन सा क्या अभी हम लोग डिस्कस किया था? Socialist secular integrity. In Tinsukia Distillery Company versus State of Assam, the Supreme Court pointed out that the term socialist used in the preamble to the Constitution of India means a state whose basic policy is to prohibit concentration of wealth and uplift the living standard of the people. Prohibit concentration of wealth and uplift the living standard of the people. It has been observed by the Supreme Court of India that the word the word socialist in the preamble enable the court to lean more and more in the favor of nationalization and state ownership of industry in Axel Beer versus Union of India case. State which of the following statement is correct. देखो भाई कौन सा करेक्ट है ना, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है क्योंकि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये किस में कहा गया था? केशवानंद भारती किस में कहा था? प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट्स टू इट्स बेसिक फीचर, सही है, केशवानंद भारती में ही कहा गया था। प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं नहीं नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल इज लाइक अ प्रोलॉग टू द, इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही इज, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेट्स टू इट्स बेसिक फीचर्स। The object of the framer of the Constitution of India was to establish what is generally known as the welfare or the social state, has been held in Motilal versus Uttar Pradesh government. Object of the framer of the Constitution of India was establish what is generally known as the welfare or the social state, has been laid down in Motilal versus Uttar Pradesh government case. The word secular used in the preamble of the Constitution of India means state has no common religion. Common नहीं है, state has no religion. State has no religion of its own and all religions are treated equally. This is the meaning of secular in Indian context according to the Indian constitution. India is a secular state because it has no state religion and all the religions are treated equally. That's why India is a secular state, because a state has no religion. Just unlike Pakistan, which is a Muslim country, the preamble of the Constitution of India declared India as republic because इंडिया को रिपब्लिक क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, ठीक है ना, उनको चुना जाता है, ये कोई मोनार्की नहीं है, इसीलिए इंडिया को रिपब्लिक कहा जाता है। The term economic justice in the preamble to the Constitution of India is a resolution for, it is a resolution for equal distribution of wealth, economic justice, है ना, जस्टिस ऑफ, जस्टिस क्या क्या होना, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, है ना, जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल,
तो इकोनॉमिकल में ये आ जाएगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। Which of the following word is not used with the liberty in the preamble of the Constitution? Speech. Which of the following word is not used with the liberty in the preamble of the Constitution? देखो लिबर्टी के साथ साथ क्या लिबर्टी ऑफ फेथ एक्सप्रेशन एंड वर्शिप स्पीच का नहीं। Which one of the following statement is correct? Preamble can be amended by Parliament by an objective resolution. नहीं। Preamble is a part of Constitution and can be amended without change in the basic structure. ठीक है ना, ये सही है। Objective result. Preamble is a part of the Constitution and can be amended under Article 368 without any restriction. नहीं restriction है, आप amend तो कर सकते हैं लेकिन उस amendment से basic feature of the Constitution change नहीं होना चाहिए। तो which of the following is not included in preamble of the Constitution? Preamble of the Constitution में क्या 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 लिबर्टी किया गया है, इक्वालिटी किया गया है, जस्टिस भी है, जस्टिस किया गया है, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉवर्टी, लिबर्टी ऑफ फेथ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ। ठीक है ना, लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एंड स्टेटस। लेकिन यहाँ पे सैंक्टिटी इट वाज नॉट इंक्लूडेड। What of the following articles describe the Republic of India as union and not as the federation? Though the words are India, that is Bharat shall be a union of state. आर्टिकल 1 अभी हम लोग बात किए थे, है ना। और यही क्या हो जाता है, अगर प्रीएम्बल में पूछेगा भारत में क्या मेंशन है तो वहां पे भारत नहीं है, केवल इंडिया है। बट आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत इज a union of state. India that is Bharat shall be a union of state. The name of the union given in the constitution is India or Bharat. According to the Constitution of India, which among the following is empowered to establish the new state? न्यू स्टेट कौन बना सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा के अकॉर्डिंग? पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है ना। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट? आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। अंडर आर्टिकल 3 of the constitution, the parliament may by law form a new state. No bill for the purpose shall be introduced in parliament except on the recommendation of president. Power to constitute new states and determination of its boundaries vest in it was vested in parliament. Parliament under article 3 did this, ठीक है ना। And no bill for the purpose shall be introduced in the parliament except अगर रिकमेंडेशन होगा प्रेसिडेंट के द्वारा तो। बाकी पार्लियामेंट हैज पावर अंडर आर्टिकल 3 टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन इंडिया। Power to constitute new state and determine its boundary rests in parliament. The authority to alter the boundary of the state in India rests with parliament. The power of the parliament to form new states or alteration of area and boundaries is drawn from the constitution other than Article 246. Within the meaning of Article 3 of the Indian Constitution, uh, the Parliament by law may can alter boundary or name of the existing states. Which of the following in India is empowered to admit into the Union or establish new state? Parliament. Through which amendment of the Constitution of India Sikkim was included in the Union of India? Sikkim was included in India by the 36th Amendment Act. ठीक है। The first state in independent India which was
created on linguistic basis was, सब लोग जानते हैं यार, आंध्र प्रदेश was the first state of India which was मतलब formulated by on the basis of language. Which of the following statement is correct with regards to the formation of new state and alteration of area, boundaries, or name of existing state in India? Parliament may by law alter the boundary of any state of India. सही है. Parliament may diminish the area of any state. Parliament may by law alter the name of any state. Parliament is bound by the advice of the state legislature of the concerned state in the case the area, boundary, or name of the state is being altered. ना ना भाई ना. चौथा गलत है, बाकी एक दो तीन सही है. पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 3 टू डू दीज थिंग्स एंड इट कैन नॉट और ये जरूरी भी नहीं है कि इसको पार्लियामेंट में लेट डाउन किया गया, और लेट डाउन एक ही शर्त पे करेगा अगर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होगा तभी, अदरवाइज पार्लियामेंट हैज फुल पावर रिगार्डिंग दिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप? The tour journey of another state for few months. This is not the criteria. By deprivation आपका आपका citizenship जा सकता है. By renunciation, by acquisition मतलब renunciation आप त्याग रहे हो citizenship तब चला जाएगा. Acquisition मतलब आप किसी और state का acquisition, किसी और country का citizenship acquire कर रहे हो, तो by deprivation ठीक है, तो हो सकता है, citizenship जा सकती है. Who is not a citizen by domicile? Those who are born in the territory of India, yes, they are the citizen, very much citizen. Those whose either mother or father was born in the territory of India, ये भी होगा citizen. Those who have been ordinarily residing in the territory of the India after commencement of the Constitution of India due to his work in India, इसके कारण कोई citizen नहीं बन जाता है, ठीक है ना? Who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the Constitution of the India. ठीक है, ये हो सकता है. Who is not citizen in India? Can a juristic person acquire citizenship under Part 2 of the Constitution of India? No, juristic person cannot acquire citizenship. Article 6 enshrines the provision conferring right of the citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. Which one of the following provision is incorrect? Article 6 enshrines the provision conferring right of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan. He or either of his parents or any of his grandparents was born in India
as defined in the Government of India Act 1953. Such person has so migrated before 19 July 1948. Such person has so migrated on or after the 19th July 1948. He has been registered as a citizen. Such person has got married in India. Such person has got married in India is the not a valid point. The system of dual citizenship within the country exists in dual citizenship का सिस्टम कहाँ चलता है? इंडिया में तो चलता नहीं है, फ्रांस में भी नहीं चलता और यूके में भी नहीं चलता है। ये तीनों कंट्री जो है सिंगल सिटीजनशिप को मान्यता देती है। यूएसए एक ऐसी कंट्री है, मतलब नॉट सिंगल कंट्री, मतलब यूएसए among the option is the country who provide dual citizenship, ठीक है। मतलब यहाँ पे यूएसए का सिटीजनशिप भी होता है और अपना पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है। इंडिया ओनली सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। Which article of the Constitution of India prescribe that a person who voluntarily acquires the citizenship of foreign state shall not be a citizen of India under Article 9? Article 9 कहता है ये, ठीक है। Article 9 क्या कहता है? A person who voluntarily acquires the citizenship of the foreign state shall not be the citizen of India, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन देख लेते हैं। Fundamental rights are fundamental in nature because these are the that basic rights which was necessary for a dignified human life. That's why these rights are called fundamental right, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल राइट आर कंटेन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो फंडामेंटल राइट जो कंटेन करता है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में करता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितने तरह का फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये करता है कितने तरह का, बताओ जी। 5 करता है, 6 करता है, 7 करता है, कितना करता है? 6 करता है। उसको क्या क्या कहते हैं? 6 वो कैसे डिवाइड है? तो पहला जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तीसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, चौथा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और पांचवा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। सेकेंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, इसके अंतर्गत भी 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो पहला है आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। इसके अंतर्गत भी 5-6 राइट्स आते हैं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, Article 21 Protection of Life and Personal Liberty, Article 21A which talk about right to education, or Article 22 the protection against arrest and detention in certain cases,
तीसरा फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसके अंतर्गत दो फंडामेंटल राइट्स आते हैं, एक है 23 और दूसरा है 24, 23 एंड 24। 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। इफ बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। ठीक है। अगला है जो रिलीजन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट है, जो कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके अंतर्गत चार फंडामेंटल राइट्स आते हैं, 25, 26, 27 और 28। तो 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगला फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि अंतर्गत आता है 29, 30। 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज और 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगला फंडामेंटल राइट जो कि छठा है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। इसके अंतर्गत चार आते हैं, लेकिन मेनली 32 है जो अपना काम का है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। 33 कहता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू द फोर्सेस के रिकॉर्डिंग बात करता है। 34 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। जब मार्शल लॉ फोर्स में होगा तब रेस्ट्रिक्शन इन सब राइट पे कैसे लगाएगा उसकी बात करता है। 35 कहता है legislation to give effect to the provision of this part। ये है ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। हाँ, चलो। तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग आर्टिकल। पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? पार्ट 3 हो जाता है 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 to 35 comes under part 3 of the Indian Constitution, which talks about fundamental right of the people. Does a foreign citizen have fundamental right under the Indian Constitution? देखो, यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो हम लोग के पास है 12 से 35 तक, तो उसमें से कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो केवल सिटीजन के लिए है, लेकिन बाकी फंडामेंटल राइट वो सब के लिए है। सिटीजन के लिए तो है ही, अदर पर्सन के लिए भी है। तो जी हाँ, some fundamental rights apply to all person whereas other are restricted to the citizens only. So when was the Magna Carta granted in the England? तो Magna Carta granted in England in 1215 1215 में मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में ग्रांट किया गया था। मैग्ना कार्टा कुछ नहीं है, बेसिकली सम फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि पहले मोनार्की हुआ करती थी तो मतलब किंग इज अबव ऑल लॉ, बट मैग्ना कार्टा के द्वारा थोड़ा सा मतलब लाया गया चीजें इस रूप में, ताकि अब लॉ इज एबव, मतलब लॉ इज द सुप्रीम अथॉरिटी अब हो जाएगा, मतलब यहाँ से। तो ये जस्ट एक स्टेप था टुवर्ड डेमोक्रेसी। ठीक है, मोर राइट्स टू द पीपल, तो इसको इसीलिए मैग्ना कार्टा बोलते हैं, और ये 1215 में आया था। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनुमरेटेड, ये सही है। बोथ आर एनुमरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, और डीपीएसपीज भी हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, सुनिएगा। The American doctrine of waiver of fundamental right is a part of Indian constitution। नहीं, इंडिया में कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट का वेवर कर सकते हैं, अनलाइक यूएसए। यूएसए में आप फंडामेंटल राइट का वेवर कर सकते हैं, पर इंडिया में नहीं कर सकते हैं।
No person can waive his fundamental right under the Indian Constitution as they are sacrosanct and no individual can tinker with them. ये सही है, ठीक है ना? क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है, सैक्रोसेंट इन नेचर है, इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल को इसके साथ टिंकर करने का राइट नहीं है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। Which of the following case is known as fundamental right case? Fundamental right case is known as केशवानंदा भारती केस, ठीक है ना? और हेवियस कॉर्पस यहीं पे पढ़ लेते हैं, हेवियस कॉर्पस केस। जैसे फंडामेंटल राइट केस के अगर बोला जाए तो केशवानंद भारती केस है, और हेवियस कॉर्पस केस अगर बोला जाए तो एडीएम जबलपुर केस है, ठीक है। इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक राइट, ठीक है ना। इकोनॉमिक राइट्स की कोई बात नहीं है यहाँ पे। फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल राइट जो 3 में वहां पे इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमिक राइट्स की बात कहाँ पे करता है, कोई बता सकता है? प्रियम्बल में इकोनॉमिक राइट्स की बात इसके अंतर्गत आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वहां पे इकोनॉमिक वाला बात आ जाता है, लेकिन फंडामेंटल राइट में ऐसा कोई राइट नहीं है, इकोनॉमिक राइट्स। Which of the following fundamental right is available to both citizen and non-citizen? Right to equality before law under Article 14. Which of the following fundamental right is available to both citizen and non-citizen? तो देखो, यहाँ से हम लोग पता करते, जैसे हम लोग के पास 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं। मेनली बेसिकली स्टार्ट होता है 14 से और 32 और 35 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें से जो राइट है जो केवल सिटीजन को ही मिलता है वो कौन सा है? 16 है, 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये केवल सिटीजन्स के लिए है, बाकी सारा फंडामेंटल राइट सबके लिए है। सिटीजन के लिए तो सारा है ही, अदर पीपल के लिए भी है। तो इस जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें आर्टिकल 16 को मेंशन किया है, आर्टिकल 19 को मेंशन किया, 14 को किया, 29 को किया है। तो इसमें से कौन सा नॉन सिटीजन को और सिटीजन को दोनों मिलेगा? तो आर्टिकल 14 है जो दोनों को मिलेगा। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये तो सिटीजन को ही केवल मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। जो फंडामेंटल राइट क्या है वो जस्टिसेबल भी है और इन्फोर्सिबल भी है, लेकिन जो फंडामेंटल जो डीपीएसपी है वो जस्टिसेबल एंड इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है। The power of judicial review is available under which of the following? Judicial review, देखो आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट के बीच में आएगा तो वो चला जाएगा हवा खाने के लिए, ठीक है ना। तो आर्टिकल 13 जो है वो ट्रीट किया जाता है एज ए जुडिशियल रिव्यू की तरह, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ आर्टिकल 13, सुनिएगा। आर्टिकल 13 कहता है लो इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन विथ फंडामेंटल राइट? डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर क्या होगा? नल एंड वॉइड। और यहीं से हम लोग को क्या मिलता है? जुडिशियल रिव्यू का पावर मिलता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसेबल भी है और एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। इसको इंश्योर कौन करता है? आर्टिकल 13 करता है। किसके द्वारा करता है? बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू के द्वारा करता है। इसीलिए आर्टिकल 13 को जुडिशियल रिव्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। अब आते हैं आर्टिकल, थोड़ा सा यार 1 मिनट का गैप या
जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार. आनंद मानंद वसे वसंत. Hey guys, do like, share, and subscribe my channel and text me back after the subscription. Hi guys, how are you?